everyone, welcome back to my channel. Let's continue with the chapter 2. So, the first topic is equal treatment of parties. The parties shall be treated with equally and each party shall be given a full opportunity to present his case. मतलब ये है कि दोनों पार्टीज को आर्बिट्रेटर ने इक्वली ट्रीट करना चाहिए एंड ऑल्सो दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए अपने अपने तरफ से केस को एक्सप्लेन करने के लिए. The basic principles of natural justice for the arbitrator may be not to receive any information from one party which is not disclosed to the other party. मतलब एक व्यक्ति से इंफॉर्मेशन दूसरे व्यक्ति को डिस्क्लोज करने बिना नहीं लेना चाहिए. Not to disclose or witness one party in the absence of the opposite party. एक पार्टी को एग्जामिन नहीं करना चाहिए दूसरे पार्टी की एब्सेंस में. मतलब एग्जामिन नहीं करना चाहिए दूसरे पार्टी की एब्सेंस से. Without being expressly authorized by the parties not to disclose the matter on the basis of secret inquiries. आर्बिट्रेटर ने सीक्रेट इंक्वायरीज नहीं करना चाहिए. ये 3 पॉइंट्स बेसिक प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल जस्टिस का. सो नेक्स्ट topic is determination of procedure to be followed for conduct of proceedings. The arbitral tribunal shall not be bound by the Code of Civil Procedure 1908 or the Indian Evidence Act 1872. Arbitral tribunal separate है जो नहीं bound होता है Code of Civil Procedure और Indian Evidence Act से. The parties are free to agree on the procedure to be followed by the arbitral tribunal in conducting its proceedings. Parties को flexibility दिया जाता है proceedings का procedure select करने के लिए. If the parties fail to determine any certain procedure, the arbitral tribunal may subject to this part conduct the proceedings in the manner it considers appropriate. यानी इफ पार्टीज ने प्रोसीजर को नहीं सेलेक्ट किया तब आर्बिट्रेटर ही एक अप्रोप्रिएट प्रोसीजर डिटरमाइन करेगा जो सूट होता है. The arbitrator should be clear that he should not violate the principles of natural justice. He should give a hearing to the parties and he should give a reasonable time and opportunity to them to present their respective claims. Principles of natural justice को वायलेट नहीं करना चाहिए आर्बिट्रेटर ने. दोनों पार्टीज को सुनाने के मौका देना चाहिए एंड ऑल्सो कुछ टाइम भी देना चाहिए अपने क्लेम्स को प्रेजेंट करने के लिए. So the next topic is place of arbitration. Parties are free to agree on the place of arbitration. Failing to determine place by the parties, it shall be determined by the tribunal considering the convenience of the parties. Normally, parties ही decide करेगा where the arbitration proceedings to be held. But if in case parties नहीं select किया, then arbitrator ही select करता है considering the convenience of the parties. मतलब पार्टीज के कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए प्लेस सेलेक्ट करता है. कौन? आर्बिट्रेटर ने. नेक्स्ट सेक्शन इज लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स. Parties are free to agree upon the language to be used in the proceedings. If the parties fail to determine, then the arbitrator will determine the language. फिर वही बात है पार्टीज ही डिटरमाइन करेगा लैंग्वेज में किस लैंग्वेज में प्रोसीडिंग्स होना चाहिए. इफ पार्टीज डिड नॉट डिटरमाइन देन आर्बिट्रेटर विल सेलेक्ट द लैंग्वेज. The next topic is statement of claim and defense. The party who makes the claim is called claimant while the party against whom the claim is made is called the respondent. मतलब पार्टी जो केस डाला हुआ है उसको क्लेमेंट बोलते हैं और जिसके ऊपर केस डाला गया है इसको रेस्पोंडेंट बोलते हैं. Within the period of time agreed upon by the parties or determined by arbitral tribunal, the claimant should file
statement of claims with all the supporting documents, and the respondent may also submit a counter claim or plead set off. मतलब ये है कि जो भी क्लेम्स है या जो भी काउंटर क्लेम्स है, दोनों पार्टीज ने जो टाइम लिमिट दिया गया है विथ इन दैट टाइम लिमिट सबमिट करना पड़ेगा आर्बिट्रेटर को. Either of the parties may amend or supplement its claim or defense unless it is inappropriate or delay in submitting. मतलब already submit किया गया claims को भी changes कर सकते हैं within the time limit only if it is appropriate. The statement of claim and defense shall be completed within the period of 6 months from the date of appointment of arbitrator. The time limit is within the 6 months from the date of appointment of arbitrator. The next topic is hearings and written proceedings. Section 24 provides that in the absence of any prior agreement between the parties on whether hearing are to be done orally or on the basis of written documents submitted to the arbitral tribunal, the arbitral tribunal has the power to decide whether the proceedings shall be held orally or on the basis of documents and other materials. मतलब ये है कि if there is any agreement between the parties mentioning specifically about the hearing patterns, then it should be followed accordingly. If agreement में कुछ भी नहीं mention किया, तब आर्बिट्रेटर ने डिसाइड करेगा ओरली रखना चाहिए प्रोसीडिंग्स को या रिटर्न बेसिस पे रखना चाहिए. ये आर्बिट्रेटर ने डिसाइड करेगा if there is no such topic contained in the agreement. The next topic is default of the party. If the claimant without any sufficient cause do not submit his statement of claim, the arbitral tribunal has discretion to terminate the proceedings. किसी sufficient reason नहीं होते हुए claimant ने अपने claim को नहीं submit किया, then arbitrator ने proceedings को terminate कर सकता है. Respondent fails to submit his statement of defense, then the arbitral tribunal shall continue the proceedings. लेकिन respondent ने claim submit नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता arbitrator को, proceedings चलता रहेगा. If a party fails to appear at an oral hearing or to produce documentary evidence, the arbitral tribunal may continue the proceedings and make the arbitral award on the evidences available. कोई भी पार्टी एविडेंस सबमिट नहीं करता है, तब आर्बिट्रेटर ने उसके पास पड़े हुए एविडेंस को ही इसके बेसिस से ही आर्बिट्रल अवार्ड देगा. Next topic is appointment of experts. Section 26 provides that on specific issues, the arbitral tribunal may appoint one or more experts, ask such experts to determine specific issues or deliberate upon such issues. मतलब आर्बिट्रेटल ट्रिब्यूनल ने एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर सकता है केस को सॉल्व करने में और हेल्प करने के लिए. Further, the arbitral tribunal may also direct the party to give the expert any relevant information, produce and provide access to all relevant information, documents, goods, etc. for inspection. आर्बिट्रेटर ने पार्टीज को भी डायरेक्ट किया सकता है एक्सपर्ट को रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए. The tribunal, on written or oral request of any party, shall ask the expert to participate in the oral arbitral proceedings, permit the parties to put questions to such experts who had made the report, permit the parties to present their own expert witnesses to have viewpoints over the issue. मतलब पार्टीज आर्बिट्रेटर को रिक्वेस्ट करने से आर्बिट्रेटर ने एक्सपर्ट को हियरिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एक्सेप्ट कर सकता है और पार्टीज भी एक्सपर्ट के डिसीजन के ऊपर क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं और पार्टीज अपने तरफ से दूसरे एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं अपने व्यू पॉइंट्स को बताने के लिए. मतलब ये ध्यान में रखना, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक्सपर्ट्स को
उनकी पावर डेलीगेट नहीं करना चाहिए, मतलब आर्बिट्रल अवार्ड देने का पावर एक्सपर्ट्स के हाथों में नहीं रखना चाहिए। The next topic is making of arbitral award and termination of proceedings. Making of an arbitral award and termination of proceedings are pivotal milestones in the resolution process. ये important बात है। क्या क्या arbitral award and termination of proceedings. Crafting an arbitral awards includes meticulous examination of evidence, legal arguments, applicable laws to render final and binding decisions. Termination of proceedings simplifies the conclusion of arbitration process. इसका अर्थ ये है कि arbitral award देना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आर्बिट्रेटर ने एविडेंस को कीनली एग्जामिन करना चाहिए, लीगल आर्ग्यूमेंट्स होता है पार्टीज और आर्बिट्रेटर के बीच में, और फाइनली लॉ के हिसाब से फाइनल डिसीजन देता है। Our next topic is arbitral award. It is similar to the judgment given by the court. Similar होता है कोर्ट की जजमेंट से। It is a remedy to the parties depending on the issue of the dispute. This includes injunction, monetary award and incentives. So, 3 decisions दे सकते हैं। पहला है इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब इसमें एक एक्शन को स्टॉप करने का जजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टी के काम से दूसरे पार्टी को हार्मफुल है, तब कोर्ट ऑर्डर देता है नॉट टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी। ये इंजेक्शन होता है। नेक्स्ट, मॉनेटरी अवार्ड मतलब कंपेंसेशन देने का डिसीजन है। थर्ड इज इंसेंटिव्स। कभी कभी पार्टीज को इंसेंटिव्स भी देते रहते हैं। नेक्स्ट, जनरल प्रिंसिपल्स। ये आप ही पढ़ लीजिएगा, सिंपल है। हु कैन चैलेंज ओनली द पार्टीज। जो पार्टीज अग्री होता है उसके ऊपर आर्बिट्रेशन चलता है, वो पार्टीज ही चैलेंज कर सकता है आर्बिट्रल अवार्ड को। अथॉरिटी, अवार्ड्स कैन बी चैलेंज बिफोर कोर्ट। कोर्ट में ही चैलेंज करने का कर सकता है। टाइमलाइन, विद इन 3 months में ही चैलेंज कर सकता है। ऑटोमेटिक स्टे एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स। First one is final award. Award made in accordance with the requirement of law and it is final and binding. लॉ के अनुसार दिया जाता है फाइनल अवार्ड, और फाइनल है एंड बाइंडिंग है पार्टीज के ऊपर। नेक्स्ट, इंटरिम अवार्ड विच रिमेन्स इन फोर्स टिल फाइनल अवार्ड इज रेंडर्ड एंड विच इज फाइनल एंड रिगार्ड्स टू द मैटर्स दैट डील्स विद द सेकेंड वन इज इंटरिम अवार्ड। इंटरिम अवार्ड मतलब ये इंटरिम अवार्ड 2 प्रकार का होता है। एक है अवार्ड जो चलता रहता है जब तक फाइनल अवार्ड आता है, और दूसरा है प्रोसीडिंग्स के मिडिल में, प्रोसीडिंग्स के बीच में तब तक हुए गए मैटर्स पर अवार्ड पास करता है। दूसरा अवार्ड होता है ना, हम ये प्रोसीडिंग्स के बीच में देता है ना, वो अवार्ड इंटरिम अवार्ड कह जाता है, नॉट द फर्स्ट वन। Next, settlement award. During arbitration process, the parties may choose to settle instead of adjudicating by arbitrator. Then the terms of settlements could be the part of an award. मतलब कुछ केसेस में पार्टीज ही आपस में सेटलमेंट करते हैं आर्बिट्रेटर के बिना, तब आर्बिट्रेटर ने पार्टीज के ऊपर जो सेटलमेंट होता है वही अवार्ड में लिख लेगा। इसे सेटलमेंट अवार्ड कहता है। Next, last one, additional award. After final award, when found that some claims were not resolved, then the parties can request a tribunal to make an additional award. मतलब फाइनल अवार्ड इश्यू करने के बाद जब कोई मैटर्स रिजॉल्व नहीं होता है, तब फिर से उन मैटर्स के ऊपर अवार्ड देता है, दूसरा अवार्ड देता है, उसको एडिशनल अवार्ड कहलाता है। Our next topic is rules applicable to substance of dispute.
इन केस ऑफ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशंस फॉलो इंडियन लॉस, मतलब डोमेस्टिक आर्बिट्रेशंस में इंडियन लॉस फॉलो करना चाहिए. इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल फॉलो द लॉ अग्रीड बाय द पार्टीज विद इन द अग्रीमेंट. इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में पार्टीज ने जो अग्रीमेंट में डिसाइड करते हैं किस कंट्री की लॉ के हिसाब से प्रोसीडिंग्स होता है, वो पार्टीज ने ही डिसाइड करेगा. If the parties did not mention anything in the agreement, then the arbitral tribunal shall apply rules of law that is considered appropriate. Parties नहीं बताया तो agreement में arbitrator ही decide करेगा which law to be applicable. Next topic is decision making by the panel of arbitrators. In case of sole arbitrator, such decisions are taken by such sole arbitrators. Where there are पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी शैल प्रिवेल. मतलब एक आर्बिट्रेटर होगा तो वही सारे डिसीजंस लेगा, लेकिन पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स होता तो सब मिलकर एक साथ डिसीजन लेना पड़ेगा. The presence of arbitrator cannot be required at the same place. They can make decisions through calls, mails, fax, etc. सब arbitrators same place में रहना जरूरी नहीं है, वो फोन में या फैक्स मेल्स के द्वारा भी बात करके डिसीजंस ले सकते हैं. Our next topic is time limit for arbitral award. The award in the matters of domestic arbitration shall be made within a period of 12 months from the date of completion of pleadings. मतलब domestic arbitration ने within 12 months में award issue करना चाहिए. In case of international commercial arbitration, there is no specific time limit, but try to complete it within 12 months. International arbitration में कोई specific time limit नहीं होता है, लेकिन जनरली में 12 months में issue करना चाहिए. If the award is made within 6 months from the date of arbitral tribunal enters, then he shall be entitled to additional fees as the parties may agree. मतलब if arbitrators ने 6 months में ही award issue करता है तब उसको additional fees भी मिल सकता है parties के acceptance से. The parties may by consent extend the period not exceeding 6 months only if there is a sufficient cause. मतलब parties ने award issue करने का time limit extend भी कर सकता है only on the sufficient cause. If the arbitral award is delayed for the reasons attributable to the tribunal, then the court may order reduction of fees not exceeding 5% for each month of delay after giving reasonable opportunity of being heard. मतलब ये है कि आर्बिट्रेटर ने जब अवार्ड इश्यू करने का डिले करता है, लेट करता है, तब आर्बिट्रेटर को फाइन लगेगा. फाइन क्या है? उसको फाइन एवरी मंथ नॉट एक्सीडिंग 5% फी काटा जाता है. नॉट एक्सीडिंग 5% याद रखना. लेकिन फाइन लगाने का पहले आर्बिट्रेटर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए. So our next topic is fast track procedure. The parties may at any time agree in writing to have their dispute resolved by the fast track procedure. मतलब parties ने कभी भी अपना intention change करके fast track procedure adopt कर सकते हैं, लेकिन writing में होना चाहिए, ये जरूरी है. Next procedure to be followed by the arbitral tribunal. The arbitral tribunal shall decide the dispute on the basis of written pleadings without any oral hearing. First track procedure में arbitrator ने proceedings writing में ही continue करता है, oral में नहीं होता. Arbitral tribunal shall have power to call for any clarification or information. मतलब ट्रिब्यूनल को कभी भी इंफॉर्मेशन के लिए बुलाने का अधिकार होता है. An oral hearing may be held only if all parties request or arbitrator considers necessary. If parties request करते तो या arbitrator को जरूरी पड़ता है, ये नेसेसरी है, दिखता है आर्बिट्रेटर को, तब ओरल हियरिंग रख सकता है आर्बिट्रेटर ने.
Award under this section shall be made within a period of 6 months. 6 महीने के अंदर अंदर अवार्ड देना पड़ता है. If not made, then section 29A shall apply. If 6 months में अवार्ड नहीं दिया तो सेक्शन 29A का सब रूल्स अप्लाई होगा. सेक्शन 29A मतलब हम ऊपर पढ़ चुका सेक्शन टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्राल. इस सेक्शन के सारे रूल्स अप्लाई होगा इफ 6 months विद इन 6 months द अवार्ड वाज नॉट गिवन. सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेटलमेंट. During the proceedings, if any settlement is reached between the parties, the proceedings will terminate and the settlement will be recorded as arbitral award. मतलब ये है कि proceedings के बीच में parties ने अपने आप आपस में settlement कर लेता है तो arbitrator ने उस settlement को award में लिखकर proceedings को terminate कर सकता है. The tribunal may reject the request made by the parties for settlement only if the circumstances are opposed to public policy and terms of settlement were unfair or fraudulent. मतलब ये settlement arbitrator ने reject कर सकता है कब? जब ये settlement public policy के against में होता है या तो unfair है और fraudulent होता है तो. If an arbitral award is settled by paying money, then usually it carries interest rate of 2% or more than 2% more than current interest rate. यानी arbitral award में decision money pay करने का होता है तब जनरली इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट करंट इंटरेस्ट रेट से 2% ज्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ करंट इंटरेस्ट रेट इज 10%, then it will be 12%. Okay, understand? So the next topic is termination of proceedings. Arbitral proceedings shall be terminated by the final order of the tribunal. Arbitral proceedings तब terminate होता है जब ट्रिब्यूनल से final order आता है. Arbitral tribunal may order for termination of proceedings where the claimant withdraws his claim. Parties agree on termination of proceedings. Arbitral tribunal finds that the continuation of proceedings is unnecessary or impossible. मतलब ये है कि claimant ने claim को withdraw करने से और पार्टीज ने आपस में टर्मिनेशन करने के लिए अग्री होते हैं और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ये फील करता है ताकि प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करने से कोई फायदा नहीं है. ये तीनों केसेस में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर देता है. Once the sole arbitrator terminates the proceedings, the same cannot be recalled. एक बार arbitrator ने terminate किया proceedings को, then फिर से नहीं चालू कर सकता. And the next topic is correction and interpretation of award and additional award. Arbitral tribunal on the request of the party may correct the mistake or give interpretation of award within 30 days from the receipt of request. मतलब if award में कोई mistake होता है और parties जब ये notice करता है और arbitrator को request करता है तब arbitrator ने mistake को 30 दिन के अंदर अंदर रेक्टिफाई करना चाहिए. If parties request within 30 days from the receipt of arbitrary award the tribunal to make additional award, it shall make an additional award within 60 days from the receipt of the request. जब आर्बिट्रल अवार्ड इश्यू करने के बाद कोई मैटर्स बचा हुआ है तब पार्टीज रिक्वेस्ट करने से आर्बिट्रेटर ने एडिशनल अवार्ड देता है within 60 days. 60 days के अंदर अंदर. In both the cases, the tribunal may, if necessary, extend the time for correction or for additional award for additional 30 days. दोनों cases में भी time limit को additional 30 days तक extend कर सकता है. And this is our final topic, finality and enforcement of arbitral awards.
Finality of arbitral awards. The final arbitral award is binding upon the parties and any other persons claiming under them. हमें पता है final award binding होता है parties के ऊपर. The award cannot be challenged after the expiry of the period, that is within 3 months. award को कोर्ट में चैलेंज कर सकता है within 3 months में, इसके बाद नहीं. The arbitral award that becomes final and binding can only be questioned before the court only on the ground of lack of jurisdiction. मतलब इस अवार्ड को पार्टीज ने क्वेश्चन करने का अधिकार मिलता है only on the lack of jurisdiction. Enforcement. An arbitral award, irrespective of the country in which it was made, is enforceable as a decree of court. Arbitral award ने degree of court के बराबर enforce होता है. Once the arbitral award is received, the party seeking enforcement may file it before the court within the jurisdiction where the subject matter is situated or where the assets of losing party are लोकेटेड. मतलब आर्बिट्रल अवार्ड को एनफोर्स करने के लिए पार्टी ने कोर्ट के पास जाना पड़ता है जिस जुरिस्डिक्शन में ये केस चला गया और जिस जुरिस्डिक्शन में लॉसिंग पार्टी का असेट्स पड़ा है. The court may grant stay on enforcement of award if the party files application challenging the award under section 34. कोर्ट ने अवार्ड को स्टे में रखता है if parties challenge करता है तो, वरना नहीं. parties challenge करता है तो कोर्ट ने अवार्ड को स्टे में रख सकता है. The court may refuse enforcement if the party against whom the award is invoked furnishes proof of certain conditions such as incapacity of the party, invalid arbitration agreement, procedural irregularities, etc. मतलब ये है कि कोर्ट ने एनफोर्समेंट को रिजेक्ट करता है इफ पार्टी ने विथ फुल प्रूफ्स कोर्ट के पास जाकर सबमिट करता है ताकि पार्टी ने इनकैपेसिटी हो, इनकैपेबल हो और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इनवैलिड है और प्रोसीजर चलाना में इरेगुलरिटीज आ गए या तो फ्रॉडुलेंट है, इलीगल है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सब पार्टी ने फुल प्रूफ्स के साथ कोर्ट को जाता है, तब कोर्ट ने एनफोर्समेंट को रिजेक्ट करता है, लेकिन प्रूफ्स पक्का होना चाहिए. So that's the end of the video. If you like the content, please like, share and subscribe.